Hello friends, I am from Biology faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about animal husbandry. I am sure you will enjoy today's learning. Let's start with our lesson. Now when we use the word animal husbandry, what does it actually mean? Animal husbandry क्या होता है? Animal husbandry is a branch of agriculture concerned with the care and management of livestock. ये agriculture की ही एक branch है animal husbandry. Animal husbandry deals with the feeding, breeding, housing and health care of livestock for getting maximum benefits. Now what is livestock? Livestock किसे कहेंगे? हम हर किसी animal को तो livestock कहेंगे नहीं. Livestock refers to farm animals, that is डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन एनिमल्स को जिनको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, सच एज काउज, शीप एक्सेट्रा, kept by humans for the useful commercial purposes. Now when we use the word animal in animal husbandry, we mean only those domesticated animals which are reared mostly for economic or for recreation purposes such as cattle, buffalo, sheep, goat, camel, pigs, horses, etc. Now it also includes poultry farming and fisheries. Why there is need for animal husbandry when we do agricultural practices? हम इतना crop grow करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा भी. So why there is need for animal husbandry? As animal husbandry is scientific management of farm animals, it serves many other uses for human beings. एनिमल हस्बेंड्री से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, बहुत सारे सर्विसेज एज वेल एज बेनिफिट्स मिलते हैं, सच एज it helps in enhancing milk production, it increases egg production, meat production, fish production, and it also helps in proper management of agricultural waste. First is cattle farming. Cattle farming is the practice of rearing cattle by providing facilities for raising livestock. Livestock includes domestication of cows, buffalo, sheep, goats, pig, etc. Cattle farming is carried out to raise cows and buffaloes as important livestock. Cattle farming में cows and buffaloes को हम raise करते हैं. The two major species of Indian cattle are Bos indicus, that is cows, and Bos bubalis, that is buffaloes. Now on the basis of their utility, cattle are classified into two types, namely milch animals and draught animals. Milch animals. मिल्च एनिमल से हम पता लगा सकते हैं नाम से मिल्च, मिल्क. Milch animals or dairy animals produces milk. Now the males of this type are of no useful for working on the farm. Now second is draught animals. Draught animals are used for carrying out agricultural works like tilling, irrigation and carting. Cows belonging to this category are poor milk yielding varieties. Now what are the management practices for cattle farming? First is cleaning, which involves periodic washing to get rid of the dirt and loose hair. Proper cleaning होनी चाहिए animals की, ताकि जितना भी dirt और loose hair है उनको हम wash out कर सकें. Second is shelter facilities, includes well ventilated roof sheds which protect cattle from rain, cold and sun. Third is feeding of cattle includes supply of uncontaminated and balanced diet. जो डाइट देंगे हम काउज एंड बफेलोज को वो अनकंटामिनेटेड होना चाहिए एंड हाइजीनिक होना चाहिए प्लस बैलेंस डाइट होना चाहिए. एनिमल फीड आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली रफेज फीड एंड कंसनट्रेट फीड. व्हाट आर रफेज फीड? रफेज फीड कंटेंट्स हाई फाइबर कंटेंट एंड प्रोवाइड एनर्जी. रफेज फीड में हाई फाइबर कंटेंट होता है. इट कंप्राइजेस फॉडर, ग्रासेस, साइलेज एंड लेग्यूम्स रिच इन फाइबर. Second type of feed is concentrate feed. It is a mixture of cereals, seeds and oil seeds cake rich in protein content. This type of feed is easily digestible and it helps the animal in increasing body weight. जब animals का body weight increase करना है तब हम उनको concentrate feed देंगे. Now fourth, cattle should be protected from diseases. Cattle को हमेशा disease से protect करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी एनिमल को डिजीज़ हुआ तो वो डिजीज़ बहुत ईजीली दूसरे एनिमल्स में पास ऑन हो सकती है. Now diseases in cattle are caused by both external as well as internal parasites. External parasites lives on the skin. Animals की skin पे रहते हैं external parasites and causes skin diseases. Internal parasites वो stomachs और intestinal parts को affect करते हैं. Now
अभी हम लोग ने डिजीजेस के बारे में पढ़ा. नाउ देयर आर सर्टन प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डिजीजेस इन एनिमल्स. दे आर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट. जितने भी एनिमल्स डेड हैं और एनिमल वेस्ट है उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए और उसके बाद अच्छे से वॉश आउट होना चाहिए. शेल्टर्स शुड बी क्लीन, ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड. शेल्टर्स जहाँ एनिमल्स को हम रखते हैं वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए. पीरियोडिक विजिट ऑफ वेटनरी फिजिशियंस टू चेक द एनिमल्स. वेटनरी डॉक्टर्स का पीरियोडिक विजिट होना चाहिए ताकि वो एनिमल्स को चेक कर सके टाइम टू टाइम, ताकि कोई भी एक भी एनिमल्स बीमार ना हो. Hygienic management of animals and animal products. Now, fifth, infectious diseases are caused by pathogens like bacteria, viruses and fungi. Sheds should be clean and disinfected regularly. Sheds को हमेशा clean रखना चाहिए और उनका disinfection होना चाहिए from time to time. Now, vaccination against various diseases should be provided to farm animals. जैसे हमें बचपन में वैक्सीनेशन होती है हमारी, वैसे ही एनिमल्स का भी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होना चाहिए. नाउ वैक्सीनेशन शुड बी गिवन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. नेक्स्ट आफ्टर कैटल फार्मिंग इज पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्रिंग, hen, चिकन, सबको पता है. पोल्ट्री फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट. पोल्ट्री फार्मिंग का मेन एम होता है एग प्रोडक्शन, दैट इज फॉर एग एंड चिकन मीट. The fowls are used for producing eggs and broilers are used for producing meat. पोल्ट्री फार्मिंग में फाउल्स यूज़ होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एग. फाउल से हमें एग मिलता है और ब्रॉयलर्स से हमें मीट मिलता है. नाउ द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन, दैट इज इंडिजीनस, जो हमें इंडिया में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल असील, एंड फॉरेन वेराइटी दैट इज एक्जॉटिक, बाहर से लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेगहॉर्न. ब्रीड्स फॉर वेराइटी improvement are focused on to develop new varieties for the following desirable traits. Indian variety that is asil and foreign variety exotic variety leghorn, उन दोनों के ब्रीड में हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि हमें ये ट्रेट्स मिल सके. नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ताकि ज़्यादा नंबर और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिले चिक्स की. ड्रॉफ बॉयलर्स पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन. समर एडाप्टेशन कैपेसिटी, दैट इज़ टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर. उन्हें जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे दैट इज़ प्रोजेनी मिलेगी, उनमें टॉलरेंस होना चाहिए हाई टेम्परेचर को लेके. नाउ लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उनको लो मेंटेनेंस होना चाहिए. नाउ रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड्स विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स. आफ्टर पोल्ट्री फार्मिंग इज फिश फार्मिंग. Fish is a cheap source of animal protein for our food. Fish farming is also called as aquaculture. This is culturing of fish for commercial purposes. Now, fish production includes finned, that is true fish, as well as shellfishes such as prawns and mollusks. Now, there are two ways of obtaining fish. One is from natural sources, which is called as capture fishing. Second, the other way is by fish farming, which is called as culture fishery. The water source of the fish can be either seawater or fresh water, such as in rivers and ponds. Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine as well as freshwater ecosystem. First is marine fisheries. What is marine fisheries? India's marine fishery resources include 7,500 kilometers of coastline and the deep sea beyond it. Popular marine fishes varieties includes pomfret, mackerel, tuna, sardines and Bombay duck. Fishes are captured by locating large school of fish in the open sea with the help of satellites and echo sounders. Marine fish of high economic value are farmed in sea water. Shellfish such as prawn, mussels and oysters are also farmed in sea water. Now, oysters are cultivated for their pearls. Pearls हमें oysters से मिलते हैं. Second type of fisheries is inland fisheries. Freshwater resources included canals, ponds, reservoirs and rivers. Brackish water resources where seawater and freshwater mixed together, such as estuaries and lagoons, are also important for fish reservoirs. While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not very high. इसमें yield ज़्यादा नहीं होती है. Most
Fish production from these resources is through aquaculture. जो कमर्शियल कल्चरिंग होती है फिशेस की, दैट इज aquaculture. वहाँ पे हमें yield हाई मिलता है. Fish culture is sometimes done in combination with a rice crop so that the fish are grown in the water in the paddy field. Paddy field में घुटने तक पानी यूज़ होता है, वहीं पे हम fish culturing करते हैं. More intensive fish farming can be done in composite fish culture system. Both local as well as imported fish species are used in such system. In such system, a combination of 5 or 6 different fish species is used in a single fish pond. इस टाइप ऑफ सिस्टम में हम 5 या 5 से ज़्यादा फिश की वेराइटीज़ एक साथ एक ही पॉन्ड में यूज़ करते हैं. These species are selected so that they do not compete for food among them, having different type of food habits. As a result, the food available in all the parts of the pond is used. For example, as katla are surface feeders. कतला सरफेस पे फीड करते हैं पॉन्ड या कोई भी टाइप ऑफ वाटर बॉडी हो. रोहूस फीड इन द मिडिल जोन. रोहूस जो होते हैं वो मिडिल जोन ऑफ द वाटर बॉडीज़ में फीड करते हैं. सिमिलरली मृगल्स एंड कॉमन कार्ब्स आर बॉटम फीडर्स, जो पॉन्ड का जो बॉटम है वहाँ पे फीड करते हैं. एंड ग्रास कार्ब्स feed on the weeds together. These all species can use all the food in the pond without competing with each other. This increases the fish yield from the pond. Now, fish farming encounters the problem of lacking of quality seeds or eggs. सबसे main disadvantage या हम कह सकते हैं problem है lack of good quality eggs. Fish are bred in ponds by hormonal stimulation. हम hormonal stimulation करते हैं इसके लिए. Fish are injected with hormones that stimulates the production of eggs or seeds. This ensures the supply of pure fish seed in desired quantities. After fish farming is beekeeping. Beekeeping, bee से सबको पता है honey, शहद मिलता है. Honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. The practice of maintaining honeybee colonies in beehive is called as beekeeping or apiculture. Now remember, for fish, aquaculture, bee, apiculture. Apiaries or bee farms are established for commercial production of honey. हम bee farm establish करते हैं for the commercial production of honey. Beekeeping is a cheap and popular agricultural enterprise. Honey produced in the beehive is the source of honey used in food and medicines. Now, the taste and the quality of the honey depends upon the flowers the bees visit for their nectar collection. जो क्वालिटी हमें हनी की मिलती है वो डिपेंड होती है कि बीज दैट इज़ मधुमक्खी किस फ्लावर्स पे फीड करती हैं. Wax obtained from these hives is used in ointment, polishes, etc. Now the main question, जो कॉमन मधुमक्खी हमें आसपास अपने घर के आसपास कहीं पे भी मिलती है, क्या उसको हम यूज़ करके हनी प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं. Now there are special types of bees which is used for honey production. Apis cerana indica is the local varieties of bees available for honey production. Apis cerana indica local variety, that is वो Indian variety है. Similarly, Apis dorsata and Apis flori are the other important common varieties used for honey production. An Italian bee variety, that is Apis mellifera, is commonly used for commercial honey production. Bees of these species are known for high amount of honey collection. So students, to conclude this lesson, we learned that apart from plants, how animals provide us with different daily life products which we use and their management. Now I hope you all enjoyed today's learning. If you have any more doubt, you can go to the following link.